कल्चर पार्ट 3। आज हम बात करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इससे आगे भी हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, नेम इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें दामियान, दारा, दोकर, दामन, डोला, किंग, नागाड़ा, फ्लूट, गागर, सरंदा, रबाब, साजी कश्मीर, सितार, शिलांग, संतूर, सवारनी, तंबकनेरी। पहले बात करते हैं दमान के बारे में, दमियान के बारे में। दमियान, द वर्ड द मीन्स इसमें साउंड, मियान स्टैंड्स फॉर स्वीट, thus दमियान मीन्स स्वीट साउंड। The Damian instrument is like guitar made up of 7 strings. Damian is made up of 7 strings. Dara. Dara instrument is used for Ladisha. Ladisha song are sung with the use of this instrument. सवाल बनता है, the Dara is used for which music? इसमें Ladisha। सवाल बनता है, which musical instrument is used for Ladisha? इसमें Dara। दोकर भी इस्तेमाल किया जाता है लडिशा के बारे में। A community of singers in Kashmir Valley are known as Ladisha who play dokar. Daman. Daman instrument is made up of 2 set of cattle drums which are known as mo and pho, means male and female। ठीक है ना, दामन। तो आपने देखा दामन is made up of 2 set of cattle drums which are known as mo and pho, means male and female। तो आपने दामन is made up of mo and pho। क्वेश्चन है, which is used to play दामन? इसके बाद damshing, this means small stick। सवाल बनता है, the small stick which is used to play दामन is known as damshing। अब बात करते हैं डोला के बारे में। The dola is mostly played with the folk dance of bands। King, the king is the most interesting folk musical instrument of Jammu region। The king is played especially in Karkan ballads having religious themes music। Nagada, the nagada is an instrument resembling to dola. It has many names like nakara, nagada, dangi। Question है, the nagada is used during इसका paddy harvesting। Flute, in Kashmir flute is known as nai। तो आपने नाई था। What is the Kashmiri name of flute? इसमें नाई। What is the Kashmiri name of flute? इसमें नाई। The nai gets its description in Nilmat Purana। In nai there are 7 holes for 7 swaras। Other types of nai are PP in Kashmir, Kashmiri language PP। Both the flute have 7 houses for 7 swaras। अब बात करते हैं गागर के बारे में। In Kashmiri gagar is made of brass। In Kashmir gagar is made of brass। The gagar is played with kirtan in temple। Sarnada, the sarnada, तो अपने the sarnada क्या है? Sarnada musical instrument। The sarnada musical instrument looks like Indian sarangi। Saint of Jogis of Jammu use this instrument। Rabab, क्वेश्चन मिलता है, नेम द फेमस पर्सन ऑफ कश्मीर विच इज एसोसिएटेड विद रबाब। इसके बिलाल अहमद दुबे। बिलाल अहमद दुबे इज एसोसिएटेड विद रबाब। रबाब इज द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इन फोक म्यूजिक। क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड रबाब इन कश्मीर फ्रॉम तुर्किस्तान। इसका जवाब है ज़ैनुल आबिदीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड रबाब इन कश्मीर। इसका जवाब है ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम तुर्किस्तान। क्वेश्चन है, द रबाब इज मेनली यूज्ड इन सिंगिंग। इसमें छकरी एंड सूफियाना कलाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मेनली यूज्ड इन सिंगिंग छकरी एंड सूफियाना कलाम इस कश्मीर वैली से रबाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन सिंगिंग छकरी एंड सूफियाना कलाम इसमें रबाब। साजी कश्मीर, द साजी कश्मीर इंस्ट्रूमेंट हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम नॉर्दर्न ईरान। द साजी कश्मीर इज मेड अप ऑफ वुड हैविंग 3 मेजर गट स्ट्रिंग्स। तो आपने द साजी कश्मीर is made of wood having 3 major gut strings। Sitar, the sitar is a musical instrument which was invented by इसके बाद आमिर खुसरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, who invented sitar? इसके बाद आमिर खुसरू। बहुत इंपॉर्टेंट, who invented sitar? इसके बाद आमिर खुसरू, the courtier of Alauddin Khilji। The name sitar was derived from Persian sitar which means 3 strings। ठीक है ना, तो आपने याद रखो इसमें द सितार
the sitar. The name sitar was derived from Persian setar, which means three strings, which the instrument originally had. सवाल बनता है, the sitar has how many strings? with three strings. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The sitar has how many strings? इसके में three strings. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The sitar has how many strings? with three strings. The Kashmiri sitar is the original instrument accompanying Sofiana Kalam. तो आपने sitar is associated with Sofiana Kalam or Moscow came into Central Asia. Question है, the sitar has 7 strings. तो आपने याद रखना, पहले आपने याद रखोगा the sitar. तो आपने याद रखना, originally the sitar had how many strings? with 3 strings. The sitar had originally 3 strings, but presently the sitar had 7 strings. तो आपने याद रखना, the sitar has how many strings? Originally sitar has 3 strings, while as nowadays it has 7 strings. तो आपने याद रखा, the strings of sitar, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The strings of sitar are fitted by hook which is known as a mizrab. तो आपने याद रखा, the strings of sitar are fitted by hook known as a mizrab. Scaling, the Kashmiri musical instrument is like two flutes are joined each other, is known as scaling. Santur, name the famous persons which are associated with Santur. इसमें Bhajan Sopuri and Shiv Kumar Sharma. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Name the famous Kashmiris which are associated with Santur. इसका जवाब है Bhajan Sopuri and Shiv Kumar Sharma. Question है, which music is not possible without Santur? इसका जवाब है Sufiana. सवाल बनता है, Sufiana music is not possible without which instrument? इसमें संतूर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The Sufiana music is not possible without which instrument? इसका जवाब है संतूर. शिव कुमार शर्मा एंड, तो आपने याद रखना, द शिव कुमार, तो आपने द शिव कुमार शर्मा एंड भजन सोपुरी आर द फेमस संतूर मिस्त्रो brought into classical stage. The santoor is made up of which wood? इसमें mulberry wood. Santoor has how many strings? with 100 strings. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The santoor has how many strings? with 100 strings. बहुत इंपॉर्टेंट है. The santoor has how many strings? with 100 strings. The shape of santoor is trapezoid. Its right side is called baran and left side is called jill. तो आपने याद रखना fact. The right, सवाल बनता है, how is the shape of santoor? इसमें trapezoid. The right side of santoor is called इसमें baran. The left side of santoor is called इसमें jill. 12 wires on the right side of the brass and those on the left are iron. There are also 12 notes on the right and 12 on the left side in santoor. Famous santoor players. Name famous santoor players of Jammu and Kashmir. इसका जवाब है शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी एंड राहुल शर्मा. सरनाई इज ए बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है ना, ये आपने याद रखना. द सरनाई इज ए बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट. द सरनाई वाज मेंशनड इन नीलमत पुराना एंड कल्हनाज राज तरिंगडी. क्वेश्चन है, व्हाट इज द कश्मीरी नेम ऑफ सरनाई? इसका जवाब है शहनाई. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सवाल बनता है, which is also called as Shahnai in Kashmiri music with Sarnai. बहुत ही क्वेश्चन है. The Sarnai is also called Shahnai. बहुत the Sarnai is also called as Shahnai. बहुत क्वेश्चन है. The Sarnai is also called Shahnai. Tambaknur. क्वेश्चन है, Tambaknur. क्वेश्चन है, which is the famous Tambaknuri player of Jammu and Kashmir? So Bilal Ahmed Dube. Originally, tambak instrument belongs to Central Asia and Iran. तो आपने the tambaknur belongs to Central Asia and Iran. In Kashmir, the tambaknuri, it is known as tambaknuri. The tambaknur is a surai-shaped earthen musical instrument. अब बात करते हैं fairs and festivals of Jammu and Kashmir के बारे में. Pura Mandal Fair is a religious fair is held in which village? Pura Mandal village. The Pura Mandal fair is celebrated in which district? इसको Samba district. तो आपने देखा, the Pura Mandal fair is celebrated. The Pura Mandal fair is held at which village? Pura Mandal village. The Pura Mandal village is located in which district of Jammu? इसको Samba district.
द पूरा मंडल फेयर इज हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पूरा मंडल फेयर इज हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ, इसका जवाब महाशिवरात्रि इन द मंथ ऑफ February और March। द पूरा मंडल इज a 3-day फेयर विच इज सेलिब्रेटेड फॉर मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। सवाल बन सकता है which fair is celebrated for the marriage of Lord Shiva and Goddess Parvati, both which fair is celebrated for the marriage of Lord Shiva and Goddess Parvati, so Pura Mandal fair। Mansar food and craft fair, Mansar food and craft fair, the Mansar food and craft fair is organized by Jammu and Kashmir Travel and Tourism Department at Mansar Lake। The Mansar food and craft fair is a 3-day fair which is held in the month of Baisakhi, that is April, ठीक है ना। Mansar food and craft fair is held in the month of Baisakh, that is April। The Mansar food and craft fair is organized to promote Indian handicrafts and cuisines। Bahu fair, the Bahu fair is the biggest Hindu fair which is held at Kali temple in Bahu fort of Jammu, ठीक है ना। Bahu fair, the Bahu fair is celebrated twice a year, once in March and April, then in September, October। During the Bahu fair, people offer prayers, a sacred dip in Tavi river and enjoy variety of joy। Jiri fair, the Jiri fair is an annual fair which is held in Jiri village of Jammu region on Guru Nanak's birthday। तो आपने याद रखना which fair is associated with the birthday of Guru Nanak, both which fair of Jammu and Kashmir is associated with the birthday of Guru Nanak, with Jiri fair। The Jiri fair is celebrated in which month? October, November। The Jiri fair is dedicated to Baba Jitu, a local farmer of Jiri village who committed suicide due to unfair act done by the Zamindar landlord। Jiri Mela, it is celebrated in Jiri village। Chatair Chadush, ये आप छोड़ो। Mela Pat Badarwa, the Mela Pat Badarwa is an annual fair celebrated in Badarwa in the ceremony of memorable meeting of King Akbar and Raja Nagpal of Badarwa। बहुत ही क्वेश्चन है which fair is celebrated in the memory of meeting of King Akbar with Raja Nagpal of Badarwa, इसका सवाल मेला पत बदरवा। It is celebrated in August September। अब बात करते हैं लोहरी के बारे में। The Lohri is which type of festival? So harvest festival is celebrated in Jammu region। क्वेश्चन है The Lohri festival is celebrated on, इसका जवाब मकर संक्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The Lohri festival is celebrated on, इसका जवाब मकर संक्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लोहरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसका जवाब है मकर संक्रांति। सवाल इस है लोहरी फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद, इसमें मकर संक्रांति। बहुत ही द लोहरी फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद, इसमें मकर संक्रांति। द लोहरी सवाल विच फेस्टिवल commemorates the harvest of winter crops and to welcome the spring season, इसमें लोहरी फेस्टिवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which festival is celebrated to commemorate the, तो आपने इसमें which festival is celebrated to commemorate the harvest of winter crops and to welcome the spring season, इसको लोहरी फेस्टिवल। The लोहरी फेस्टिवल is celebrated on 13 January, 13 जनवरी। The लोहरी फेस्टिवल is devoted to इसका फायर एंड सन गॉड, तो आपने याद रखा which festival is devoted to fire and sun god, इसका लोहरी फेस्टिवल। बहुत ही क्वेश्चन है which festival is devoted to fire and sun god, इसका लोहरी फेस्टिवल। in लोहरी फेस्टिवल, during लोहरी फेस्टिवल youngest हवाnas are performed, तो आपने इसमें during लोहरी फेस्टिवल yagnas and havanas are performed in every household and temple of Jammu। the boys perform chija dance with their chija, सवाल इस तरह पूछते हैं chija dance is associated with, सवाल पूछता है which dance is associated with लोहरी, इसको chija dance। बहुत ही प्रश्न है which dance is associated with लोहरी festival, इसको chija dance। तो आपने फैक्ट याद रखोगे लोहरी इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, इसका समय जनवरी, दैट इज 13 जनवरी। कल्मिनेशन ऑफ विंटर एंड पासिंग ऑफ द विंटर सोलिस। क्वेश्चन है बैसाखी इज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल 13-14, तो आपने याद रखें द बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसमें अप्रैल 13-14।
मेकिंग हिंदू सोलर न्यू ईयर द स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल बैसाखी। ये आपने याद रखना। बैसाखी इज ऑल्सो कॉल्ड एज विसाखी। क्वेश्चन आपने याद रखना। बैसाखी इज ऑल्सो कॉल्ड विसाखी। द बैसाखी इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ सिख कम्युनिटी। क्वेश्चन है द बैसाखी इज हेल्ड ऑन द फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर वैसाख विच फॉलोज ऑन 3 अप्रैल। ठीक है ना। तो आपने उसमें द बैसाखी इज हेल्ड ऑन द फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर Vaisakha, which falls on 3 April. So, the Baisakhi festival is celebrated on 3 April. The Baisakhi festival is also the day when the 10th Guru Gobind Singh Ji formed the Khalsa sect on his birthday. Sikh people perform Bhangra dance on the Baisakhi occasion. सवाल बनता है which festival is associated with the Khalsa? बहुत क्वेश्चन है। विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द खालसा। विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ खालसा बाय गुरु गोबिंद सिंह। इसका सब है बैसाखी। ड्यूरिंग बैसाखी पीपल टेक डिप इन रिवर्स वाइज टेम्पल्स एंड गुरुद्वारास। नवरात्र फेस्टिवल। क्वेश्चन है नवरात्रि फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वेज थ्रू आउट इंडिया। इन जम्मू पीपल sow barley grains and bowl on the first day of Navratri. Navratri means fertility worship, which is commonly known as Khetri. People keep fast for 7 days. On the 8th day, they break their fast, reap and grow Khetri with Kanjak Puja. People visit temples, Bhavawali, Mata Kali temple, Mata Vishnu Devi temple. ये आपने याद रखना होगा। नवरात्रा या नवरात्रि इसको कहते हैं। नवरात्रि फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड विष्णु देवी बाहु फोर्ट। द नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस ए ईयर। तो आपने उसमें द नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस ए ईयर। विष्णु देवी बाहु फोर्ट, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। दे आर विजिटेड, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है बाहु मेला। Bahu Mela is held at Bahu Fort in Jammu. The Bahu Mela is celebrated twice a year during Navratras, March, April and September, October. Significance क्या है Bahu Mela का? A major religious and cultural event attracting large number of people from Jammu to pay their absence and at Bewala Mata Temple. Jiri Mela, बहुत ही क्वेश्चन है। जीरी मेला। क्वेश्चन है द जीरी मेला इज हेल्ड इन विलेज जीरी इन जम्मू ऑन द जम्मू अखनूर हाईवे। द जीरी मेला बिगिन्स एट हार्तिक पूर्णिमा। ही इज ओरिजिनली हेल्ड फ्रॉम अगरजितू। ये आप छोड़िए। It was Jiri Mela is celebrated to remember the sacrifice of Baba Jitu, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। इसमें जीरी मेला, इसमें आपने याद रखना। इसमें बाबा दा तालाब people तो आपने ड्यूरिंग जीरी मेला people devotees take a dip in बाबा दा तालाब। सुध महादेव मेला is held in Sudh Mahadev temple in Chenali Tahsil district Udhampur. The Sudh Mahadev Mela is commonly celebrated on full moon Purnima and the Hindu month Asad. क्वेश्चन है Subhardar Mela. The Subhardar Mela is held in Subhardar, lush green high altitude meadow located approximately in Badrawa in district Doda, ठीक है ना। Subhardar Mela in Doda district। सॉल्व है Subhardar Mela is celebrated in which district? इसके फिर Doda district in Badrawa. The Subhardar Mela is dedicated to इसके Subhar Nag देवता। अब बात करते हैं
फेस्टिवल्स ऑफ कश्मीर के बारे में। क्वेश्चन है, पहले बात करते हैं होली फेस्टिवल के बारे में। होली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। द होली इज ट्रेडिशनल वे ऑफ बर्निंग होलिका दहन on the first day and splashing of colors on the second day. Tihar festival. The Tihar festival is a religious festival celebrated in Bhadrawa, Doda and Kishtwar district of Jammu region. Question है अब, Navra. Navra means Kashmiri New Year. Navra. The traditional New Year celebration by Kashmiri Pandits. Navra. हेरथ, महाशिवरात्रि। हेरथ आपको याद रखूंगा, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को हम हेरथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरथ भी बोलते हैं। किसको? महाशिवरात्रि को। याद रखना होगा आपको इसके लिए, महाशिवरात्रि के लिए Mahashivratri is celebrated all over India, but most Kashmiri Pandits really believe that it is uniquely their festival. Herath is known as a Mahashivratri. The word Herath is derived from Sanskrit. That is Harathi. Har means another name of Lord Shiva. Ratri means night. ठीक है ना? The Herath is also known as Mahashivratri. ठीक है ना? तो आपने the Herath is also known as Mahashivratri. What is the literal meaning of Herath? इसके night of Lord Shiva. महाशिवरात्रि इसको कहा जाता है। दिस मीन्स द हेरथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज महाशिवरात्रि। द महाशिवरात्रि मीन्स नाइट ऑफ लॉर्ड शिवा। हेरथ तो आपने इन कश्मीर द हेरथ स्पेसिफिकली सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। Kheer Bhavani Mela. Kheer Bhavani festival is a major religious Hindu festival which is celebrated in Kheer Bhavani temple located in village Tulmula. The Kheer Bhavani festival is celebrated on Jayasta Astami, dedicated to Hindu goddess Rangya Devi. ठीक है ना? खीर भवानी, तो आपने इधर सुने द खीर भवानी इज सेलिब्रेटेड ऑन इसका सिर्फ Jasta Astami, which is dedicated to Hindu goddess Rangya Devi. Kheer Bhavani temple was originally built by Maharaja Pratap Singh and later it was renovated by Maharaja Hari Singh. The Kheer Bhavani temple is dedicated to goddess Rangya Devi. The Kheer Bhavani temple is dedicated to goddess Rangya Devi. तो अपन the Kheer Bhavani temple is dedicated to इसमें goddess Rangya Devi. क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला मीन्स इसमें जित्शा अष्टमी। ठीक है ना? ये आपने याद रखना। इसमें द खीर भवानी इज सेलिब्रेटेड ऑन इसमें जिस्ता अष्टमी. The festival takes place in Kheer Bhavani temple located in Tulmula in Gaunderbal district. The temple, Kheer Bhavani temple, is dedicated to goddess Rangya Devi. Zista Asthami is celebrated annual Asthami in the month of May June. Question है, बादामबारी में फेस्टिवल मनाया जाता है, ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है अप्रैल में। ठीक है ना? सवाल पूछता है, ट्यूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरीवेयर इन मंथ ऑफ मार्च अप्रैल. इट टेक्स प्लेस एट इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर. पहलगाम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग. शिकारा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त. ये आपने याद रखना होगा. द स्नो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन गुलमर्ग, सेनज शास्त्रे. The Gulmarg is also known as Queen of Hills. बहुत important question है. The Gulmarg is also known as Queen of Hills. The Snow Festival of Kashmir takes place in the month of January, organized by Department of Tourism, Jammu and Kashmir.
Diwali festival, both Diwali is celebrated in the month of October, November. That is DON, DON dawn. This means Diwali. This means that Diwali is celebrated in the months of October, November. Question है, which festival is called Festival of Lights with Diwali? Ashmukam festival. The Ashmukam festival is popularly known as Zul festival. The Ashmukam festival is observed at the historical shrine of Hazrat Zainuddin Wali in Ashmukam. Akhnur festival, Ashura festival, ये Islamic month 10th day of Islamic month. So the Ashura festival falls on which day of Islamic month of Muharram? Is 10th day. Nowruz festival is one of the most important festival in Srinagar. The Nowruz is a 9-day festival celebrated by Muslims that come a week after the New Year Shia Day. Saffron festival is celebrated in Papur town. The Saffron festival is arranged by Tourism Department of Jammu and Kashmir. Question है, अमरनाथ यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द अमरनाथ यात्रा इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ? इसका सच में जुलाई अगस्त. बहुत इंपॉर्टेंट. द अमरनाथ यात्रा टेक्स प्लेस इन विच मंथ? जुलाई अगस्त. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द अमरनाथ यात्रा टेक्स प्लेस इन विच मंथ? जुलाई अगस्त. अमरनाथ के श्रृंख में दिया जाता है शिवलिंग में, ठीक है ना. देयर आर 2 अदर आइस फॉर्म्स दैट प्रेजेंट परावती एंड शिवा गुनेशा. Shikara festival is celebrated in the month of July August Kashmir by Kashmir government. The Shikara practice in Shikara race, dragon boat race, canopola match ये खेला जाता है. ये आपने याद रखने होंगे. Saffron festival is held during which month? October November. During saffron harvesting season, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्विजीन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. डोगरा क्विजीन्स. नेम इंपॉर्टेंट डोगरा क्विजीन्स. इसका सही जवाब है मादरा, औराई, अंबल, गोरियार, कालरी, पिकल्स. तो आपने नेम इंपॉर्टेंट क्विजीन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इसका सही जो है मादरा, ओरिया, अंबाल, गयूर, कलारी, बुरबुरु, गुचियान, खटा मीठा, पिकल्स, खीर. कश्मीरी कुजीन्स में क्या क्या आता है? कश्मीरी दम ओलू, रोगन जोश, मरचांगन कोरमा, नदरू यखनी, रिश्ता, दानीवाल कोरमा, गोश्ताबा, और आता है इसमें पनीर चामन, चौक वांगन, खोफ्ता, आब गोश, कश्मीरी मुज गाड़, मदर पलो. ये आपने याद रखनी होगी. अब बात करते हैं हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में. फोर्ट्स ऑफ जम्मू रीजन. बाहु फोर्ट इज लोकेटेड इन जम्मू सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स. द बाहु फोर्ट हाउसेज, इसमें बाहु वाली माता टेम्पल. मुबारक मंडी पैलेस इज लोकेटेड इन जम्मू सिटी, ये आपने याद रखना. इसमें रामनगर फोर्ट इज लोकेटेड इन, इसका सब है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट. द रियासी फोर्ट इज लोकेटेड इन इज आल्सो कॉल्ड भीमगरा फोर्ट. द रियासी फोर्ट इज आल्सो कॉल्ड भीमगरा फोर्ट लोकेटेड इन रियासी. पुंछ फोर्ट इन पुंछ टाउन. राजौरी फोर्ट इन राजौरी टाउन. मार्ट एंड सन टेम्पल is located in which district? Anantnag district. The Mart and Sun temple was constructed by Lalitidya Muktipadia of Kolkata dynasty. Avantishwami temple is located in Avantipura, Pulwama. Who constructed the Avantishwami temple? Is King Avantivarma. Shankaracharya is located in Gopadri Hill. बहुत important question है. The Shankaracharya temple is located in which hills? इसमें गोपाद्री hills. बहुत ही important question है. The Shankaracharya is located in which hills? इसमें गोपाद्री hills, श्रीनगर. Who constructed Shankaracharya temple? इसमें राजा गोपादित्य. ठीक है ना. तो आपने अगर इसमें the Shankaracharya temple is located in which hills? इसमें गोपाद्री hills. Who constructed Shankaracharya temple? इसमें राजा गोपादित्य. Pandratham temple is located in Srinagar. Who constructed Pandratham temple? So Miru Vardhana. Parihaspora Patan. Who
built Peryaspor is Lal Tidya Muktapedya. Khankai Mola is located in Srinagar, built by Sultan Sikandar. The Khankai Mola is dedicated to Sufi saint Mir Sayyid Ali Hamdani. Best wooden example agriculture, famous for ye. Jamia Masjid Navhata, who built Jamia Masjid Sultan Sikandar. Early Masjid is located in Srinagar Eidgah. Early Masjid was constructed by Sultan Ali Shah. Tomb of Zainul Abidin's mother in Srinagar, constructed by Zainul Abidin Budshah. Hazrat Bal Shrine Srinagar, constructed by Sadiq Khan. ठीक है ना, तो आपने इसमें the who constructed the Hazrat Bal Shrine is Sadiq Khan. Hari Parbat Fort located in Srinagar. Who built Hari Parbat Fort? Ata Muhammad Khan. उसके बाद अकबर. Shalimar Bagh by Jahangir. Nishad Bagh by Asif Khan. Chishma Shahi by Ali Mardan Khan. बहुत क्वेश्चन है. Who built Chishma Shahi? Who built Chishma Shahi? Who built Chishma Shahi? इसका सही जवाब है Ali Mardan Khan. Who constructed Chishma Shahi? Ali Mardan Khan. Peri Mahal was constructed by Dara Shikoh. Who constructed Peri Mahal? Dara Shikoh. Veerinag Spring by Jahangir and Shah Jahan. Achabal Garden by Noor Jahan. Pathar Masjid by Emperor Noor Jahan. Mubarak Mandi by Dogra rulers. क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन है. द मुबारक मंडी was the royal residence of Dogra Maharajas before moving to Hari Nawaz. ठीक है ना, तो आपने याद रखना. मुबारक मंडी पैलेस was the official or the royal residence of Dogra Maharajas before moving to Hari Nawaz. Bau Fort in Jammu city, originally built by Raja Bahulochan. Amar Mahal Palace by Raja Amar Singh in Jammu city. Raghunath Temple by Gulab Singh and Ranbir Singh. Akhnur Fort in Akhnur, constructed by Mia Tej Singh, Raja Alam Singh. Bhimgra Fort in Riyasi, originally by Raja Bhim Dev, rebuilt by Gulab Singh. Ram Nagar Fort in Udhampur by Raja Suchet Singh. क्वेश्चन है, पुंछ फोर्ट इन पुंछ बाय राजा रुस्तम खान. ठीक है ना, पुंछ. सवाल बनता है, हु बिल्ट पुंछ फोर्ट बाय राजा रुस्तम खान. हु बिल्ट क्रिमची टेम्पल, इसका समय वेयर इज क्रिमची टेम्पल लोकेटेड? उधमपुर. क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्टेड भीम. सवाल बनता है, भीमग्रा फोर्ट इज आल्सो नोन एज रियासी फोर्ट. द भीमग्रा फोर्ट इज लोकेटेड इन रियासी. हु बिल्ट भीमग्रा फोर्ट इज बाय राजा भीमदेव and then rebuilt by Gulab Singh. Who built Akhnur Fort is by Mia Tej Singh.